मुख्य बिंदु। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपको ले चलना चाहता हूं एक ऐतिहासिक लम्हे की ओर। साल 2000। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका की कांग्रेस के सामने खड़े थे और बोल रहे थे, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आवाज के रूप में। उन्होंने एक बात कही जो आज भी दिल को छूती है, प्राकृतिक साझेदारी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र साथ मिलकर भविष्य को आकार दें। वाजपेयी जी ने अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय की तारीफ की, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत पुल की तरह है। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत ने आतंकवाद का सामना किया, आर्थिक चुनौतियों को झेला और फिर भी सुधारों और उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। सबसे खास बात, उनकी सोच सीमाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल गरीबी, भूख और बीमारी मिटाने के लिए करने की बात की। एक ऐसे एशिया की कल्पना की जहां हर देश को आगे बढ़ने का अवसर मिले और भारत अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया में शांति और विकास का संदेश फैलाए। मित्रों, 24 साल बाद भी ये बातें उतनी ही सटीक हैं। भारत और भी मजबूत है, हमारी आवाज और भी बुलंद है और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते और गहरे हुए हैं। लेकिन वाजपेयी जी का सपना सिर्फ भारत की तरक्की का नहीं था, वो था शांति, साझेदारी और पूरी दुनिया की खुशहाली का। तो इस क्लिप को देखते हुए सोचिए, क्या हम उस सपने के और करीब पहुंचे हैं? और हम आम नागरिक इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं? मुख्य बिंदु। वाजपेयी जी के भाषण से भारत अमेरिका प्राकृतिक साझेदार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समान मूल्यों पर आधारित रिश्ते। भारतीय प्रवासी की भूमिका दोनों देशों के बीच मजबूत पुल और भरोसे का प्रतीक। भारत की उपलब्धियां, आतंकवाद का मुकाबला, आर्थिक संकट से उबरना और करोड़ों महिलाओं की स्थानीय राजनीति में भागीदारी। आर्थिक दृष्टि, 9% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य, सुधार और वैश्विक निवेश के लिए खुलापन। वैश्विक दृष्टिकोण, तकनीक से गरीबी, भूख और बीमारी खत्म करने की अपील। शांति और सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासकर भारत अमेरिका साझेदारी। एशिया की कल्पना, एक स्थिर, बहुलवादी और लोकतांत्रिक एशिया जहां कोई देश दूसरे पर हावी न हो। न्यूक्लियर पॉलिसी, हथियारों का अंत, लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी मान्यता। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे भाषण को सुनें और अपने विचार कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि क्या भारत और अमेरिका आने वाले समय में वैश्विक शांति के लिए और मजबूती से साथ काम कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि संवाद और साझेदारी ही भविष्य का रास्ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन एंड आडियोस। Friends, don't forget to share your views in the comment box and subscribe to Kanun Plus channel. मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपको ले चलना चाहता हूं एक ऐतिहासिक लम्हे की ओर। साल 2000। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिका की कांग्रेस के सामने खड़े थे और बोल रहे थे, सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वासी लोकतांत्रिक राष्ट्र की आवाज के रूप में। उन्होंने एक बात कही जो आज भी दिल को छूती है, प्राकृतिक साझेदारी, यानी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र साथ मिलकर भविष्य को आकार दें। वाजपेयी जी ने अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय की तारीफ की, जो दोनों देशों के बीच एक मजबूत पुल की तरह है। उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि भारत ने आतंकवाद का सामना किया, आर्थिक चुनौतियों को झेला और फिर भी सुधारों और उम्मीद के साथ आगे बढ़ा। सबसे खास बात, उनकी सोच सीमाओं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने तकनीक का इस्तेमाल गरीबी, भूख और बीमारी मिटाने के लिए करने की बात की। एक ऐसे एशिया की कल्पना की जहां हर देश को आगे बढ़ने का अवसर मिले और भारत अमेरिका मिलकर पूरी दुनिया में शांति और विकास का संदेश फैलाए। मित्रों, 24 साल बाद भी ये बातें उतनी ही सटीक हैं। भारत और भी मजबूत है, हमारी आवाज और भी बुलंद है और अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते और गहरे हुए हैं। लेकिन वाजपेयी जी का सपना सिर्फ भारत की तरक्की का नहीं था, वो था शांति, साझेदारी और पूरी दुनिया की खुशहाली का। तो इस क्लिप को देखते हुए सोचिए, क्या हम उस सपने के और करीब पहुंचे हैं? और हम आम नागरिक इस दिशा में क्या योगदान दे सकते हैं? मुख्य बिंदु। वाजपेयी जी के भाषण से भारत अमेरिका प्राकृतिक साझेदार, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समान मूल्यों पर आधारित रिश्ते। भारतीय प्रवासी की भूमिका दोनों देशों के बीच मजबूत पुल और भरोसे का प्रतीक। भारत की उपलब्धियां,
आतंकवाद का मुकाबला, आर्थिक संकट से उबरना और करोड़ों महिलाओं की स्थानीय राजनीति में भागीदारी। आर्थिक दृष्टि, 9% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य, सुधार और वैश्विक निवेश के लिए खुलापन। वैश्विक दृष्टिकोण, तकनीक से गरीबी, भूख और बीमारी खत्म करने की अपील। शांति और सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, खासकर भारत अमेरिका साझेदारी। एशिया की कल्पना, एक स्थिर, बहुलवादी और लोकतांत्रिक एशिया जहां कोई देश दूसरे पर हावी न हो। न्यूक्लियर पॉलिसी, हथियारों का अंत, लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी मान्यता। मित्रों, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पूरे भाषण को सुनें और अपने विचार कमेंट में लिखें और हमें बताएं कि क्या भारत और अमेरिका आने वाले समय में वैश्विक शांति के लिए और मजबूती से साथ काम कर सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि संवाद और साझेदारी ही भविष्य का रास्ता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। होप टू सी यू अगेन एंड आडियोस। Friends, don't forget to share your views in the comment box and subscribe to Kanun Plus channel. मित्रों, आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आपको ले चलना चाहता हूं। Mr. Speaker, the Prime Minister of India. Members of Congress, it's my high privilege, great honor, and a personal pleasure to present to you His Excellency Atal Bihari Vajpayee, the Prime Minister of the Republic of India. Shall I begin? Mr. Speaker, Mr. President Pro Tem, honorable members of the United States of America, Congress. It is with a deep sense of honor that I speak to you today. I would like to thank you, Mr. Speaker, and the members of the Congress for giving me this opportunity. In November 1999, a remarkable event took place in the House of Representatives. By a vote of 396 to 4, the House adopted a resolution congratulating India and my government
on the successful elections completed in October 1999. This display of broad-based bipartisan support for strengthening relations with India is heartening. It is a source of encouragement to both President Clinton and to me as we work together to infuse a new quality in our ties. I thank you for the near unique approach that you have adopted towards my country. Those of you who saw the warm response to President Clinton's speech to our Parliament in March this year will recognize that similar cross-party support exists in India as well for deeper engagement with the United States of America. I am also deeply touched by the resolution adopted in the House of 2 days ago, welcoming my visit and the prospect of closer Indo-US understanding. I am equally encouraged by the resolution adopted by the Senate yesterday. Mr. Speaker, American people have shown that democracy and individual liberty provide the conditions in which knowledge progresses, science discovers, innovation occurs, enterprise thrives, and ultimately people advance. More than 1.5 million from my country, America is now home. In turn, their industry, enterprise, and skills are contributing to the advancement of American society. I see in the outstanding success of the Indian community in America a metaphor, the most potential that exists in Indo-US relations of what we can achieve together. Just as American experience has been a lesson in what people can achieve in a democratic framework, India has been the laboratory of a democratic process, rising to meet the strongest challenges that can be flung at it. In the half-century of our independence, we have woven an exquisite tapestry. Out of diversity, we have brought unity. The several languages of India speak with one voice under the roof of our Parliament. In your remarkable experiment as a nation-state, you have proven the same truth. Out of the huddled masses that you welcome to your shores, you have created a great nation. For me, the most gratifying of the many achievements of Indian democracy has been the change it has brought to the lives of the weak and the vulnerable. To give just one figure, in recent years, it has enabled more than 1 million women in small towns and distant villages to enter local elected councils and to decide on issues that touch upon their lives. Two years ago, while much of Asia was convulsed by economic crisis, India held its course. In the last 10 years, we have grown at 6.5% per year. That puts India among the fast 10 latest growing economies of the world. Economic activity gets more and more diversified by the year. President Clinton and many among the friends gathered here
have had occasion to glimpse our advances in information technology. We are determined to sustain the momentum of our economy. Our aim is to double our per capita income in 10 years, and that means we must grow at 9% a year. To achieve this order of growth, we have ushered in comprehensive reforms. We are committed to releasing the creative genius of our people, the enterprising skills of the men and women of the country, of its scientists and craftsmen. At the same time, we in India remain committed to the primacy of the state in fulfilling its social obligations to the deprived, the weak, and the poor. Important sectors of the country's infrastructure, power, insurance, banking, telecom, are being opened to private initiative, domestic and foreign. Trade barriers are being lowered. Mr. Speaker, ladies and gentlemen, there are forces outside our country that believe that they can use terror to unravel the territorial integrity of India. They wish to show that a multi-religious society cannot exist. They pursue a task in which they are doomed to fail. No country has faced as ferocious an attack of terrorist violence as India has over the last 2 decades. 21,000 were killed by foreign-sponsored terrorists in Punjab alone. 16,000 have been killed in Jammu and Kashmir. As many of you here in the Congress have recent hearings recognized its stark fact, no region is a greater source of terrorism than our neighborhood. Indeed, in our neighborhood in the 21st century, religious war has not just been fashioned into, it has been proclaimed to be an instrument of state policy. Distance offers no insulation. It should not cause complacence. You know, and I know, such evil cannot succeed. But even in failing, it could inflict untold suffering. That is why the United States and India have begun to deepen their cooperation for combating terrorism. We must redouble these efforts. Mr. Speaker, ladies and gentlemen, there was a time when we were on the other side of each other's globes. Today, on every digital map, India and the United States are neighbors and partners. India and the United States have taken the lead in shaping the information age. Over the last decade, this new technology has sustained American prosperity in a way that has challenged conventional wisdom on economic growth. We are two nations blessed with extraordinary resources and talent. Measured in terms of the industries of tomorrow, we are together defining the partnership of the future. But our two countries have the potential to do more to shape the character of the global economy in this century. We should turn the example of our own cooperation into a partnership that uses the possibility of new technologies for defining new ways of fighting poverty, illiteracy, hunger, disease, and pollution. Mr. Speaker, ladies and gentlemen, we believe
that India and America can and should march hand in hand towards a world in which economic conditions improve for all. A situation that provides comfortable living standards to 1/3 of the world's population, but condemns the remaining 2/3 to poverty and want is unsustainable. The foremost responsibility that the 21st century has cast on all of us is to change this unacceptable legacy of the past. It should be our common endeavor to overcome this legacy. I therefore propose a comprehensive global dialogue on development. We would be happy to offer New Delhi as the venue for this dialogue. In this Congress, you have often expressed concern about the future contours of Asia. Will it be an Asia that will be at peace with itself, or will it be a continent where countries seek to redraw boundaries and settle claims, historical or imaginary, through force? We seek an Asia where power does not threaten stability and security. We do not want the domination of some to crowd out the space for others. We must create an Asia where cooperative rather than aggressive assertion of national self-interest defines behavior among nations. If we want an Asia fashioned on such ideals, a democratic, prosperous, tolerant, pluralistic, stable Asia, if we want an Asia where our vital interests are secure, then it is necessary for us to re-examine old assumptions. It is imperative for India and the United States to work together more closely in pursuit of these goals. In the years ahead, a strong, democratic and economically prosperous India is standing at the crossroads of all the major cultural and economic zones of Asia will be an indispensable factor of stability in the region. Our cooperation for peace and stability requires us to also define the principles of our own engagement. We must be prepared to accommodate our respective concerns. We must have mutual confidence to acknowledge our respective roles and complementary responsibilities in areas of vital importance to each of us. Security issues have cast a shadow on our relationship. I believe this is unnecessary. We have much in common and no clash of interests. We both share a commitment to ultimately eliminating nuclear weapons. We have both declared voluntary moratoriums on testing. India understands your concerns. We do not wish to unravel your non-proliferation efforts. We wish you to understand our security concerns. We are at a historic moment in our ties. As we embark on our common endeavor to build a new relationship, we must give practical shape to our shared belief that democracies can be friends, partners, and allies. In recent years, through all the good and difficult times, we have spoken to each other more often than we have ever done in the past. I thank President Clinton for this leadership and vision in steering this dialogue. I sincerely thank members of this Congress for supporting and encouraging this process.
As we talk with candor, we open the doors to new possibilities and new areas of cooperation in advancing democracy, in combating terrorism, in energy and environment, science and technology, and in international peacekeeping. And we are discovering that our shared values and common interests are leading us to seek a natural partnership of shared endeavors. India and the United States have taken a decisive step away from the past. The dawn of the new century has marked a new beginning in our relations. Let us work to fulfill this promise and the hope of today. Let us remove the shadow of hesitation that lies between us and our joint vision. Let us use the strength of all that we have in common to build together a future that we wish for ourselves and for the world that we live in. Thank you. Friends, don't forget to share your views in the comment box and subscribe to Kanun Plus channel. Joint meeting will come to order. Mr. Speaker, the Prime Minister of India. Members of Congress,